Hi, good afternoon, everyone. Thank you again for turning up in such large numbers. I can actually say that this is going to be a Shandar evening without sounding cheesy. यार जितना पैसा मिलता है उतना खर्च कर देते हैं. पिछली बारी कम मिले थे तो कम बजट की बनाई थी. इस बारी थोड़े ज़्यादा मिले, थोड़ी बड़ी बनाई. But that's what the film was about. It is about enjoying the scale, the music, the dance, the performance, the love story at that scale. Hopefully it's a lot of fun along with the money spent. यार सबसे पहले तो जब मैंने डैड के साथ पहला शॉट दिया तो 3-4 टेक हुए और मैं विकास के पास सिर्फ आके ये कहता रहा कि विकास मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ. और विकास मुझसे कहता रहा शायद तू सडनली इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है. एंड आई फेल्ट लाइक आई नीड टू डू अ लॉट टू बी एबल टू जस्ट फॉर पीपल टू जस्ट गो फ्रॉम लेफ्ट ऑफ कैमरा वेयर डैड वॉज टू राइट ऑफ कैमरा वेयर आई एम. सो फॉर मी इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट दैट मुझे अपने डैड के साथ काम करने का मौका मिला. एंड आई लाइक टू थैंक विकास फॉर दैट, फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी. आई हैव बीन डायरेक्टेड बाय हिम बट आई हैव नेवर डन stood in the same frame as him. तो मैं शुरुआत में बहुत नर्वस था, बट आई थिंक 2-3 दिन बाद हम लोगों की जो केमिस्ट्री है, एक्चुअली अगर आप देखें तो वो आलिया के फादर प्ले कर रहे हैं और मेरी और उनकी बिल्कुल जमती नहीं है फिल्म के अंदर. तो हम एक दूसरे को हमेशा वी आर बोथ गेटिंग एट ईच अदर. तो 1-2 दिन के बाद वो सेट हो गया. जैसे आप देखें हम लोग आई थिंक आज तक कभी किसी फिल्म के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं आया होगा जहाँ पे लड़की के फादर और हीरो जो है वो स्काई डाइविंग करते हुए लड़ रहे हैं लड़की के बारे में. तो इस तरह के सीन्स से a lot of really fun stuff to do with dad. And I think after some time we kind of went in that space where we were going for it with each other, and it was a lot of fun. And I actually that's one of the most special things about Shandar for me, that I got to work with my father and I also got to work with my sister Sana, who's debuting in this film. That was fantastic. They are mad. ये विकास जो यहाँ बैठा हुआ है हमारे साथ, ये इतना शरीफ जो लगता है, ये बिल्कुल इतना शरीफ नहीं है. I have never seen anybody party as much as this man parties. There are a bunch of 4 mad people. उनमें से कुछ लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे मेरे सामने बैठे हैं मधु मंटेना, जो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं. और इन्होंने मुझे लाइफ में थोड़ा सेटल किया है. मैं मेरी फिल्मों की चॉइसेस हमेशा थोड़ी उल्टी सीधी सी होती थी, और पिछले कुछ सालों में इनके साथ मेरी रिलेशनशिप ऐसी हुई है कि मुझे एडवाइस करते हैं और खड़े होकर काफ़ी घंटों तक ऐसे ऐसे उंगली दिखा के लेक्चर करते हैं. विकास इज समबडी जिनका काम मुझे एक्चुअली विकास ने मुझे क्वीन रिलीज़ होने से 6 महीने पहले दिखाई थी. और उस वक्त जब फिल्म बनी थी तो रिलीज़ नहीं हो रही थी बिकॉज हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट था, डेट नहीं मिल रही थी, एंड ही वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इश्यूज़. और तब से लेके अब तक आई हैव सीन हिज जर्नी एंड द वे पीपल हैव लव्ड हिम. आई रियली डोंट थिंक कोई ऐसी फिल्म है पिछले साल, एंड आई हैड अ ग्रेट फिल्म लास्ट ईयर हैदर, बट आई डोंट थिंक दिस एनी फिल्म लास्ट ईयर जिसको इतना प्यार मिला है जितना इनकी फिल्म को मिला है. एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट हिम इज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बदले नहीं है. ही स्टिल एग्जैक्टली द सेम. जो नर्वसनेस उनकी थी जब क्वीन रिलीज़ हो रही थी और जो नर्वसनेस उनकी है, जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए थे तो मुझसे पूछ रहे थे आर ट्रेलर्स लुकिंग गुड ऑन द बिग स्क्रीन ऑल्सो ना. सो ही इज़ वेरी 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 सिंसियर, very in love with his work. The 2 other people, Anurag Kashyap and Vikramaditya Motwani, are phenomenal filmmakers and the entire country knows about them. I have the good fortune of spending a lot of time with them. And the second film that I'm doing with Falcom is a film called Udta Punjab, which they're producing, which again me and Alia are doing together, which is a fantastic script. So yes, I've been fortunate to work with these very, very talented people, and I hope that I can match their expectations and give them what they want, because they're working with the best in the industry right now. I don't know. I think that for me, it was honestly a very big deal because I watched Shahid in Ishq Vishk from his first film, and I've always been a very, very big adorer, I would say, of Shahid's work. And he's very cute with the dimples, good dancer, happy vibe. So I was very excited. And then both of us are Pisceans, and I've never been ever been fond of a Piscean in general. The first Piscean that I'm actually fond of. Yeah, actually. Fellow fish, we call each other. So it was a really, really nice experience because honestly, I got to learn a lot. Whether it was dancing, he would say, Alia, what you have learned from me? You used to keep lecturing me through the entire film. She used to lecture me through the entire film. When I lectured you? Alia, the only people I used to ask if my shot is okay exactly is Vikas But Bahl that's and Alia because, Bhatt. excuse me, Shahid used to come, babe, okay na, what do you think? What is it? I'm okay, fine, asking, then I'll say one bad point, one अरे good यार ये point. सब न्यू एज फिल्म मेकर, न्यू एज हीरोइन, तो मुझे लगा मैं कहीं ओल्ड एज नहीं लग जाऊं, तो मैं इनसे चेक करते रहता था यार कि इज दिस कूल एक्टिंग, इज दिस कूल, इज दिस So I assure रेलेवेंट. you, Shahid, you're very new. You're very new age. Yes, that's true, yeah. Perhaps. Okay. Is there any recent moment that I didn't know whether we should
Was that a spoiler? You're allowed. Yeah. Yeah. How we shot the horse riding sequence in Shandar. We were not on horses. We, I have to tell them. I yeah. was on a horse. No, you were not. You liar. We sat on a horse for exactly 3 seconds in the shot where we were both together with And I finished three. taking it in that much Yeah, time. This with, doesn't. with exactly 3 people holding the reins because they were too scared that it was too dangerous to leave me and Alia on a horse. However, the rest of the sequence was very interestingly done, and I must tell everybody about this because it's something which I also discovered. Where they have this huge trailer truck, and then they have this huge little thing behind it, like this thing with tires and stuff, and then they have poles attached to that, and then they have bungee cables, and on those bungee cables they put drums. And so actually you're sitting on 2 drums which are attached on bungee cables, and the way you ride the horse is by making yourself go up and down like this. So the entire sequence that we shot was with us actually doing this throughout and acting like we're on a horse. So please, a big round of applause. We made it look pretty real, yeah? मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता किसी के क्रिएटिविटी में. जब वो काम करते हैं तो मैं ग्रीन लाइट करता हूँ सब्जेक्ट और फिर उनसे दूर रह जाता हूँ. Because I think every filmmaker should have their own, his or her own individual voice. That's what we believe at Dharma, is to really leave it to their filmmaker's vision and not interfere. I've never been. I've been on one day on set on Shandar. Where he was actually acting in the film. I was acting in the movie. Half a day on some other film. I don't ever go on set. मैं कभी after I say okay to the film, I stay out of the filmmaker's vision. यही होता है कि instinct और एक इनहेरेंट आई वुड से इम्पल्स होती है आपकी जब आप डायरेक्टर या निर्देशक को चुनते हो, और वो मुझ में थैंकफुली इनहेरेंटली है. मैं बस अपनी गट पे जाता हूँ और उसके बाद छोड़ देता हूँ, और अगर अच्छी पिक्चर बन गई तो हम गर्व से कहते हैं कि अच्छी बनी. नहीं भी बनी तो इसका ये मतलब नहीं कि हम रिग्रेट करते हैं, क्योंकि गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं. Well, actually, the costume designer of the film, Archana Valavalkar, who did mine and Shahid's costume, she was the one who styled me. And actually, us dauran, me and Shahid both were training very, very hard. I was training, of course, for my bikini. Shahid just likes training hard in general, so he was training. So we would go to this gym and train every day, and we were both on this particular diet, and it was all very focused. And actually, my bikini shot was not supposed to be so elaborate. It was just supposed to be me in a bikini. But I worked so hard. Vikas said, अच्छा अभी तो शॉट लेना पड़ेगा, ले लेते proper bikini shot. It was not supposed to be such an elaborate shot, but because I worked hard, I pushed myself into it.